हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू रश्मि ट्यूटोरियल। एबे मु तमମାନଙ୍କ सहित डिस्कसन करी द पोर्ट्रेट लेडी रो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू किछि तो जो गुड़ाक एग्जाम रे पढ़ला भाया से गुड़ाक डिस्कसन करी तमମାନଙ୍କ सहित एबे डिस्कसन करने पूर्व गोटे इम्पोर्टेंट कथा कही रखे फ्रेंड्स, जदि तुम मैंने आम चैनल को प्रथम थर पाइका विजिट करुच ताले प्लीज सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो, जहाँद्वारा आगक जो भी वीडियो मु तुम आनिबी तार नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम मैंने पाइपर। मन रख सबुदिन 7टार आम लाइव क्लास करुचु +2 सेकेंड ईयर इंग्लिश तो जॉइन होगापी सब्सक्राइब कर दियो। एंड आज आम पोर्ट्रेट लेडी अबाउट रे फास्ट बुझीदबा कौन देन तापरे जीवा क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। तुम मैंने जानिच पोर्ट्रेट लेडीटा पोर्ट्रेट माने छवि फोटो चित्र जो कहती पोर्ट्रेट लेडीर मेन तुम बुझी आगु लेखक आउ ग्रांड मदर को लेकिन स्टोरीटा से जो स्टोरीटा ग्रांड मदर को लेकिन स्टोरीटा से अबाउट रे से केमिति छाड़ी बापा माँ केमी रही कॉलेज आ स्कूल केमी जेजेमा साथ दूसरे से उपर स्टोरीटा तो मैंने जानी खुशवाद सिंह ऑथर तो सहीटा आम ए क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। कौन फास्ट क्वेश्चन आंसर कही चलो देखा। हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? किए ऑथर थिले मुझे जस्ट तुमको कहली रस्किन बॉन्ड, खुशवाद सिंह, नैपल, विक्रम भट्ट। एटा भल भाव तुम जानिच खुशवंत सिंह। देन 2 कही हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? मेन कैरेक्टर आदि किए थिले? मदर, सिस्टर, ग्रांड मदर ना डॉटर? तुम मैंने भल भाव जानिच ग्रांड मदर आदि मेन कैरेक्टर थिले। देन नंबर 3 हाउ डिड द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? ओल्ड लॉन्ग व्हाइट बेड, वन बिग टर्बान ना होची ओल्ड स्किनी रिंकली ना यंग हैंडसम वेल बिल्ट ना ओल्ड वेल बिल्ट? माने आर कांथरे जो टंगा जाइथिबा जो ग्रैंडफादर को फोटो किपरि देखा जाउतिला एटा तुम मैंने जानिच। 3 नंबर एटा ओल्ड लॉन्ग व्हाइट बोर्ड ऑन बिग टर्बान। तापर 4 आसिला हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक? से केमिति देखिबा को थिले? ओल्ड फैट लॉन्ग थिले ना लॉन्ग फैट स्लाइटली बेंट थिले ना ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट फैट थिले ना स्लाइटली बेंट फैट? एटा जानिच सी ओल्ड फैट शॉर्ट स्लाइटली बेंट फैट। नेक्स्ट 5 कही when did the author parents live in with his grandmother? When he was a kid, when he was an infant, when he became a teenager, when he failed and became a teenager? एटा आंसर हो पिला माने ए तो जानते से तो छोट थिले अथर से पेरेंट लिव करथिले छाड़ देथिले विथ हिज ग्रैंड मदर को जो ग्रैंड मदर को छाड़ देथिले केबे जते अथर छोट छुआ थिले। 6 को जिबा व्हिच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज? डॉग्स, काउज, पैरोज, कैट्स? माने से कहा को खाइबा को दोले ता गाँ रे डॉग्स तुम जानिच। नेक्स्ट जिबा 7 नंबर को व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट से कौन खाऊथिले? थिक एंड स्टेल चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड इन इट, थिक ब्रेड विथ बटर ना उपमा ना राइस एंड कर्ड? आर आंसर हो तो मैंने जानच थिक एंड स्टेल चपातीस विथ ए लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड इन इट। 8 नंबर कही व्हाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पानी द ऑथर टू हिज स्कूल? टू कीप एन आई ऑन हिम ना टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक टू होम ना बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल ना सी वांटेड टू मीट विलेजर्स? आर आंसर तुम जानी सी बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल माने अटैच होइकी थिला टेम्पल को स्कूलटा। 9 नंबर कही वेयर वेयर द पेरेंट ऑफ द ऑथर? अबोर्ड, सिटी, अदर विलेज ना अदर स्टेट? तुम जानिच सिटी सहर रे बी एटा। व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन ए डेली बेसिस? मेडिटेशन, रीड स्क्रिप्चर्स, सिंग रिलीजियस प्रेयर, टीच अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर? एटार आंसर तुम मैंने जानिच बी रीड स्क्रिप्चर जदि बुझी
यदि न बुझीच कमेंट कर किसी असुविधा ना मुझे बुझेबी आप जो क्लास करी तुम न बुझी 11टा कही व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर टर्निंग पॉइंट कौन थिला व्हेन ही बिकम एन अडल्ट व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी ना व्हेन ही लेफ्ट हर टू लिव इन द सिटी विथ हिज पेरेंट्स व्हेन दे स्टॉप्ड टॉकिंग एटा जानिछ तुम माने बी विथ हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी 12 कही व्हेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी क्योंठार से पढ़ुले इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल हिंदी स्कूल ना नाउ व्हेयर कौटा हम ए तुम जान इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस देन कही 13 नंबर व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल द फैक्ट द she could no longer help him with the lessons because they were in city because she did not understand English now because she did not understand English and could no longer help him with the lesson एटार आंसर हम डी तुमने जानिथिबो 14 कही why did not grandmother like music कहीं ग्रैंड मदर म्यूजिक को भल पाऊ नथिले एटा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने तमन जदि पढ़िबो डेफिनेटली एग्जाम रे गुड मार्क्स आनिबो आर आंसर 14 कौन हम इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फ्लॉक सी लाइक द ओनली रिलीजियस प्रेयर्स सी लाइक द ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक सी थॉट इट वुड डिस्टेंस हिम फॉर स्टडी जेटा ए हम पिला माने ठीक अच्छे तापर आम जा 15 पाखक हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंडर हर टाइम इन द सिटी फीडिंग डॉग्स ना रीडिंग स्क्रिप्चर्स ना स्पाइनिंग द व्हेल ना टॉकिंग टू नाइबर्स आर आंसर हम सी तुम जान स्पाइनिंग द व्हेल यही टाइप टाइम को स्पेंड करते कटौले समय बिताऊे व्हाई हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरीडे जो आफ्टरनून समय से केमी स्पेंड करुले by feeding 100 of sparrows ना by taking a nap by taking to author's mother ना by going to temple एटा जानिच 100 of sparrow को से खाया को दौले एबे आसला 17 को 17 कही व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अबोर्ड टू स्टडी फॉर 5 years grandmother bid goodbye by silently kissing his forehead no one came to see him grandmother moved back to village parents move with him एटार आंसर होची ए तुम जानिच ग्रैंडमदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड किसिंग फॉरहेड माने जो कपाल जो किसिंगटा ठीक अच्छे 18 व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंडमदर्स इवनिंग स्केड्यूल ताको जो इवनिंग स्केड्यूल माने कौन चेंज होइतला ताको कोनटा चेंजेस होइतला She collected the women of the neighborhood. She would go for a walk. She would sleep early. She would talk to his parents. Our answer is A. She collected the women of the neighborhood. तापर आसिला 19 what happened when the grandmother did not for the first time? She fell ill the next day. She made this her routine. She took a break and went to village na none of the above. Our answer is A. She fell ill the next day. तापर 20 how did the grandmother react to her illness? She said her end was near. She ignored her health. She took care of her. She was admitted to the hospital. एटार आंसर होची ए तमाने जानिच she said her end was near. illness माने बेमार रे पड़िबा तापर आसिला 21 व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू इन हर फाइनल आवर्स एटा होची तमरा टॉक टू एवरीवन इन द हाउस वरीड अबाउट एवरीवन साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स वेंट टू टेम्पल आर आंसर होची सी साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स 22 हाउ डिड द ग्रैंडमदर डाई during telling beads laying on the bed in the hospital while sleeping none of the above एटार आंसर होची तमर पिला माने ए during telling beads laying on the bed then आसिला 23 कही how did the sparrows express their sorrow at the death of their grandmother they did not come that day they came and sat silently in the veranda they ate the board crumbs they chipped a lot
chirped a lot. आर आंसर होची तमर पिला माने बी. They came and sat silent in the veranda. What happened when they took the grandmother's corpse away? Neighbors visited them to pay condolences. They mourned her death in her room. Birds flew away quietly. Nothing happened. Our answer होची C. Birds flew away quietly. एबे आसिला 25. How do you feel about the character of the grandmother in the chapter? Emotional, strong, selfless, loving. In the chapter रे एटा कोन तमे जानिथिबो 100% से कोन थिले बीटा होची स्ट्रांग थिले से. Where was the author's grandfather's portrait placed on a shelf? गोटे थाकरे ना hung above the mantelpiece. hung माने झुलाइबा जो put on the mantelpiece on a table. एटा बी जानिचो hung above the mantelpiece. 27. Did the author bother to learn the morning prayers that his grandmother recited? Yes, he listened but did not bother to learn. He could not learn. No. Our answer is B. तमने जानचो he listened but did not bother to learn. 28. When was their common link of friendship snapped? When you went to college? When you went to the university they were given separate rooms? When you started working? When you went abroad? Our answer is B. When you went to the university they were given separate rooms. Number 29. What was grandmother's reaction when the author was going abroad? Happy, sad, not even sentimental. Sentimental. Our answer is तमे माने जानचो पिला माने 29 माने एटा तमर C हबो, not even sentimental. एबा आसला 30. What was her reaction when he come back after 5 years? Overwhelmed. Now she clasped the author in her arms and said prayers. Happy, sentimental. Our answer is B. Clasped the author in her arms and said prayers. बच्चा बच्चा क्वेश्चन गुड़ाक मत बहुत टाइम लगे सिलेक्शन बाहर करने तुम आशा करछि तुमने बुझी पारिथिबो. जदि बुझी न पारछ कमेंट सेक्शन मत कमेंट कर. ए 30 टा को डेफिनेटली पढ़िबो, एग्जाम रे भलो मार्क्स रखिबो. तो जदि भल लागिला ताले शेयर करिक समस्त को जणातु तुम फ्रेंड्स मानकु सो दैट से माने भी जॉइन करि परिबे. लाइक करंतु, शेयर करंतु. धन्यवाद फ्रेंड्स.